26th of November 2021 marked the first anniversary of the farmers of India laying siege to Delhi to protest against the 3 farm laws that they dubbed as Kala Kanoon. The mood at the 3 protest sites surrounding Delhi were one of elation because their 1 year did not go in complete waste. The government has promised to backtrack on the laws. Hundreds of tractors once again converged at the borders, this time decorated with lights and posters and playing loud Punjabi and Haryanvi songs. The mood had not always been so jovial. It had been open confrontation over the past 12 months, as farmer groups from across India sat at the borders of Delhi, camped in tractor trolleys, tents and makeshift bamboo huts at the Ghazipur, Tikri and Singhu borders. The bulk of those who sat came from across Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, from villages and farmlands that grow India's food. They made schedules and rosters to take turns at the protest, while the farming and the feeding of the country went on unabated. Several rounds of talks between the government and farm union leaders failed to break the deadlock. The farmers demanded that the laws be repealed, else they would continue to organize and protest by the roadside, at the borders, with panchayat calls across the farmlands of India. Farmer Mahapanchayats became regular events attended by thousands of people. The protests, with time, refused to die down, despite many an effort to discredit their intentions. With crucial elections approaching, the Prime Minister himself, in a broadcast to the nation, suddenly announced that the laws would be repealed. आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। The Prime Minister asked the farmers camping at the protest sites around Delhi to go home. But the farmers say they will reap what they have sown before they leave the field. Lakhimpur Kheri is the largest of the 75 districts of Uttar Pradesh. It is 80% rural, with the majority of the population connected to sugarcane farming in the region. Lakhimpur Kheri is also home to the largest population of Sikhs in the entire state, with many of the Sikh farmers belonging to families who were settled in this fertile region post-partition. On 3rd October morning, around 300 farmers reached Tikonia village in Lakhimpur Kheri district. They had gathered to protest against the visit by Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya to the area. At around 3 in the afternoon, on a rural road between fields, 3 speeding cars were seen coming from behind and running over a group of farmers. The farmers who witnessed the horror claimed that the 3 SUVs were linked to Bharatiya Janata Party leaders and that one of the vehicles was being driven by Ashish Mishra, son of Union Minister Ajay Mishra. A 45-second clip recorded on a cell phone and uploaded on social media shows the incident that left 4 dead and triggered a chain of violence which killed another 4. The farmers say Ashish Mishra's people shot dead 1 person while the other dead were mowed down by the SUVs. 4 से 5 कार्यकर्ता लापता हैं। हम सीधे जाएंगे, किसानों को रौंद देंगे और फिर उसके बाद हम आपके सामने सुरक्षित खड़े रहेंगे। हम वहां घटनाक्रम में गाड़ी हमारी जला दी गई और फॉर्च्यूनर हमारी जला दी गई, लेकिन हमको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। हम बिल्कुल टनाटन आ गए। भाई साहब, आप कैसे वहां से आ गए? भाई साहब, मैं आया ही नहीं। मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि यूं कहें कि कल परसों वाले दिन मैं लखीमपुर से बनबीरपुर गया था। परसों से लेकर के
आज इतने टाइम तक हम बनबीरपुर में रहे, बनबीरपुर से बाहर भी नहीं जिन निकले। गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ उसमें आप थे? नहीं, हम नहीं थे। सुबह 9 बजे से लेके शाम को समापन तक का प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक पाठशाला बनबीरपुर, जहां पर हर साल दंगल का आयोजन होता है, वहां पर मैं था। One of the people who was present on scene was BJP's Lakhimpur councillor, Sumit Jaiswal. According to Jaiswal, it was the protesters who had thrown stones at the lead car, smashing its windscreen. The driver then lost control of the vehicle and smashed into those on the road. दुनिया के आगे जहाँ पे ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कुछ दंगाई, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे, और मारो मारो इस तरीके के, मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आँख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होकर जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। किसी तरीके से फिर गाड़ी से हमने गाड़ी खोली, गेट खोल के मैं वहाँ से भागा सीधे, तो मैं सीधे भागते हुए बस वहाँ से मेरी जान बच गई, मैं वहाँ से निकल आया। सैकड़ों हजारों की संख्या में वहाँ पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में किस तरीके से वहाँ से निकलते, तो ड्राइवर ने वहाँ पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी, अब उसमें कुछ लोग शायद आ गए हो नीचे। Jaiswal's version was contested by the farmers. They said it was the Union Minister Ajay Mishra's son who was the one who triggered the mayhem. They wanted Ashish Mishra arrested and demanded that his minister father resign from his post in the central government. हाँ, गिरफ्तारी नहीं हुई, FIR दर्ज होगी, गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार के पास में टाइम है, और जो मंत्री दिल्ली में बैठ के बयान दे रहे हैं वे अपनी जबान पे लगाम करें और पहले गिरफ्तारी इस्तीफा देके और जब कोई स्पीच दे। Under pressure and national media glare, the UP police was seen posting notices at Ashish Mishra's residence, asking him to appear for questioning. He finally made an appearance to be questioned by the police on 9th October, a good 6 days after the incident in Lakhimpur Kheri. The police arrested him the same day, but the opposition and the farmers remained skeptical whether justice would prevail. The Congress leadership took their concerns over to the President of India. राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं उससे सरकार ये संदेश दे रही है पूरे देश को कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप किसान हैं, आप महिला हैं, आपके लिए न्याय नहीं है, कानून नहीं है। The opposition had reasons to be suspicious of the ruling dispensation because when they had tried to reach Lakhimpur Kheri, they had been stopped, harassed, and some of them even put under house arrest. It had been a constant tussle between those who wanted to commiserate with the grieving families and those who wanted the opposition kept at bay. The protesting farmers had been confronting vigorous pushback much before the deaths at Lakhimpur Kheri. From the time they started their march against the farm bills, they had been variously labelled, sometimes as Khalistanis, sometimes as terrorists, and always as troublemakers with a political agenda. खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, ऐसा भी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला है? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं। कनाडा के ही चीफ ने किसानों का समर्थन क्यों किया? क्योंकि कनाडा में सबसे ज़्यादा खालिस्तान समर्थक लोगों को कनाडा ने समर्थन दे रखा है। इसका मतलब है कि
इस आंदोलन के सूत्र किनके हाथ में है, ये एक सर्च का विषय है। और बाकी देशों में, दुनिया के किसी देश ने कभी भी, हमने या किसी भी देश में अगर आंतरिक रूप से कोई आंदोलन होता है तो कोई देश उस आंदोलन को समर्थन थोड़ी करता है। पर कनाडा का समर्थन करना मैं समझता हूँ कि अलार्मिंग है, और ये देश की जनता को समझना चाहिए कि आंदोलन कौन कर रहा है, इसके सूत्र किसके पास है, कौन नेता है। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9,000 भी वोट नहीं मिले। I see a very sinister design to hijack the whole movement. Be the Khalistani element, I believe it is not right. But there is enough evidence available that Tukde gang is seeking to fulfill their own agenda. Not only politicians, but even some apparently non-political personalities began bad-mouthing the protesters. Most prominent among those who saw no good in what the farmers were saying was actor Kangana Ranaut. Some of her social media posts were found to be based on false information, like when she tweeted that the 73-year-old Bhatinda woman farmer was none other than Bilkis Biwi, an anti-NRC CAA protester from Shaheen Bagh in Delhi. She insinuated that protesters like Bilkis Biwi were available for 100 rupees. The rebuttal from within the entertainment industry was quick and hard. आखदी कंगना तू अतवादी जट्टां नूं अन्नदाता आखे जिन्नू सारा संसार नहीं साडियां ही खेतां चों कणक उगदी रोटी रज खावे तां ही तेरा परिवार नहीं तू भी दोगली जी नीति चल गई गवंड ने पहला केड़ा घट करे साडे नाल सरकार नहीं. The star backing for those opposing the farm bills reached an international platform. Pop sensation Rihanna was the first to stir the hornet's nest. Her tweet citing a CNN report on internet shutdown at farmer protest sites triggered a huge backlash. Why aren't we talking about it? She asked. And within hours, several international personalities echoed the Barbadian singer. From teenage environmental activist Greta Thunberg to former adult film star Mia Khalifa, to the US Vice President Kamala Harris's niece, Meena Harris. And then came the reply from the Indian film fraternity, standing squarely with the government of India with the hashtag India Against Propaganda. Akshay Kumar to Karan Johar all tweeted in support of the government stand, stating farmers' protest was an internal and regional issue. Calling the demonstrators terrorists, Kangana Ranaut, who had 3 million Twitter followers versus Rihanna's over 100 million, lashed out at the singer, addressing her as a fool. But within a couple of days at the American National Football League, more commonly known as the Super Bowl, an advertisement in support of the farmers' protest in India was aired. On a platform where some of the world's most famous ads are launched every year, at an event to which about 100 million viewers tune in on an average. With nation and first, it was R&B megastar Rihanna. The 30-second advertisement began with a quote from Martin Luther King Jr. and termed the ongoing farmers' protest as the largest in history. The mayor of Fresno City in California joined celebrities, activists and politicians to show solidarity with the Indian farmers on protest path. I want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you as you stand against the unfair government interference against all of you. We want you to know that you're not alone, and we want to stand with you, and we will. Back in India, many a star sided with the farmers. Priyanka Chopra, Taapsee Pannu and Sonam Kapoor made their support public,
But it was Punjabi star Diljit Dosanjh who was the most vocal. He penned a song in praise for Rihanna. Diljit, to show his solidarity with the farmers, had joined them for a day of protest at the borders of Delhi. And he sang about their stand. 27th of September, a Bharat Bandh caused highway blockades across North India. Traffic jams that stretched for hours together at the national capital borders. Few trains were even cancelled. The 10-hour Bharat Bandh was called by the farmer unions to mark 1 year of farm laws. Though the bandh's effect was felt most in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh, protests were held by opposition parties across the country to show solidarity with the farmers. देश में लॉकडाउन हो गया तो उस टाइम पे भी था। ये तो स्कूल कहाँ खुल रहे हैं, यहाँ तो शराब के ठेके तो खुलते हैं, स्कूल तो बंद है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद होगी पिछले 2 साल से। जनता को उस पर भी आवाज उठानी चाहिए। जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वो भी नाराज होंगे कि देखिए हमारा रास्ता बंद कर दिया। वे नाराज नहीं होते, वो तो खुश होते हैं कि एक दिन की छुट्टी मिलेगी। मांग तो हमारी है 3 काले कानून है, ये वापस लो, MSP का गारंटी दो ये सरकार, और जब आगे की रणनीति जब इसमें कानून बनावे, जब किसानों की सलाह लेवे। इतना अच्छा नहीं, इतना कानून वापस नहीं ले, हम भी घर वापस नहीं जा, क्या 10 साल हो जाओ हमें। The government, like in all previous occasions, asked the agitating farmers to return to the negotiation table. मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है, और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। The farmers want the laws to be repealed, but the government continued to stand firm on its intention to talk and bring changes to Farm Laws 2020, but not take it back. जो साडी किसानी दा, साडे खेत मजदूर दा हाल है, ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ। The Uttar Pradesh government raised the minimum support pricing, or the MSP, for sugarcane in the state by 25 rupees per quintal a day before the Bharat Bandh was to take place. But it failed to win the farmers over. डॉलर में नहीं बढ़ा है, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ा है। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले, और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले, जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी, और बढ़ाया 25 रुपया। 10 days before the Bharat Bandh was the first anniversary of the Parliament passing the contentious farm laws on 17th of September. The tug of war over the law has been going on ever since. सरकार यही तो कह रही कि हम इसको 18 महीने स्थगित कर देंगे, तो हम भी 18 महीने इसका इंतजार कर लेते हैं। पूरा गांव बर्बाद होते दिख रहे हैं। अभी मंडियां बिकने लगी है, उसकी जो खाली जमीन थी। जब कोई कहता है कि बिल को वापस लो, तो उससे समझ में नहीं आता है कि बिल में से तकलीफ है या फिर बिल में कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन है उससे तकलीफ है। और यही सब चीज़ को बताता है कि इसमें राजनीति ज़्यादा है और किसानों के जो हित के बारे में बहुत कम बात है।
It was also the day that political parties came out in support of the farmer agitation. Once a friend in arms for the ruling Saffron Party, Akali Dal staged protests in the national capital in favour of the farmers' agitation. The alleged controversial farm reforms led to the fallout of the allies, and it continues to keep them away from each other. As key states like Uttar Pradesh and Punjab in northern India gear up for the poll season, the Prime Minister tried to reach out. In western Uttar Pradesh, Jats form 17% of the population. They have a sway over 77 of the state's 403 seats. Jats are the deciding vote bank in districts like Meerut, Baghpat, Muzaffarnagar, Saharanpur, Bulandshahr, Shamli districts. Western UP has become a sore issue for the BJP following the party's lackluster performance in the recently held Panchayat elections and discontent amongst the Jat farmers. हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। This sugarcane farming belt has been a communal tinderbox with votes usually divided on communal lines. This time around, Western UP might buck that trend with farm agitation bridging the communal divide. A political development that might upset the poll arithmetic for the BJP. In the neighbouring state of Haryana, farmer agitation days before the Prime Minister's Aligarh rally had put the ruling party in a backseat. Haryana police cracked down on farmers in Karnal, leaving several injured in a lathi charge on 28th of August. The farmers were protesting against a BJP meeting led by Chief Minister Manohar Lal Khattar on the forthcoming Panchayat polls. A video of the Karnal SDM emerged soon after, in which he was caught on camera instructing the policemen to break heads of the protesters if they break the security cordon at Karnal. Farmers laid siege to the mini secretariat demanding action against SDM Ayush Sinha, who was removed soon after the video went viral. The Karnal incident brought back the memory of similar police action against protesters in neighbouring Pipli of Haryana's Kurukshetra on 10th of September 2020. That was when the agitation against 3 farm laws had flared up for the first time in Haryana. The agitation started to grow intense with each passing day in the first week of September 2021. On 7th of September, a sea of protesters, in a massive show of strength by the farmers, breached barricades. Water cannons were used. Karnal's grain market was completely taken over by the farmers protesting against the lathi charge by police on 28th of August. Soon after the talks with the administration failed, farmers marched to Gherao, the mini secretariat in Karnal, and then for days they sat outside the mini secretariat, refusing to budge. Several rounds of talks between the farmers and district administration went on for the next 5 days before a truce was agreed. The Haryana government agreed to conduct a judicial inquiry into the 28th August lathi charge incident and promised to complete it within a month. Till the time the probe happens, former Karnal SDM Ayush Sinha, who was heard ordering cops to beat up protesters, was sent on leave. The state government also promised 2 jobs to the kin of the farmer who died following the lathi charge incident. 2 नौकरियां देने की ये बात उनसे हुई है और वो परिवार जो है इससे बड़ा खुश है क्योंकि हमारा था कि जिस परिवार का नुकसान हो गया उसकी भरपाई पे हम ज़्यादा ध्यान दें।
In Karnal, the farmers showed what their angry agitation could achieve by successful siege of the mini secretariat, despite deployment of as many as 3,400 security personnel, including those from the paramilitary forces, for days.